Is what Dr. Vajpayee said. He had a lot of good things to say, but due to some delay, we introduce next speaker. He is Shri Ram Prasadji from Hare Krishna local ISKCON temple, and he's going to talk about importance of sanskars in Sanatan Dharma. Please welcome Shri Ram Prasadji. Hare Krishna, Namaskar. Hare Krishna. It's nice to be among such a nice people, such nice Brahmanas. So I'll try to share some of my experience and my understanding and reading of the scriptures. Just to give a little bit background, well, my father, my forefathers, they are all part of this mission. At one point, my father used to be advisory for, King of Nepal. So he used to be in that level that he used to advise how they would administrate even the country or in a government level. So as I was growing up, my father had this idea because he was really following the teaching of the Vedas. He used to say that the scriptures demand that because there is dharma, artha, kam and moksha that have to be accomplished by any of us here. We can simply be like a silkworm. We all know the analogy of a silkworm, that it creates a thread so much so that ultimately suffocates inside the thread, it makes and dies. So life is not just about work hard and one day just die working hard. So therefore scriptures say dharma, artha, kam and moksha. Any people who are into the path of self-realization, which we are beautifully hearing from the previous speaker, which is known as Atato Brahma Jigyasa. Everyone must inquire three things. He must have a knowledge about three things. That is being described as Sambandha Gyan, Avideha Gyan, and Prayojan Gyan. Sambandha means as soon as the God comes into the picture, the thing is, if I don't have any relationship with God or I can't do anything about it, then why talk about God then? So therefore, first thing he talks about is a Sambandha. What is a relationship that I have between, what is the gap in between me and God? Then comes avidya, process that connects me with Him. And prayojan, it is being described as the ultimate goal of it. So, I'm here to speak about a topic we understand as the samskaras. Samskaras, in one way, it's a character or a life way, it's a life standard, how we live our life. Just like, doesn't matter what country you live in, there are rules and regulations that you need to follow in order to be accepted within that society or country. We all know that. Yes? Do you ever hear a country without any law? No. So even in the path of self-realization, if you are given a free visa to a country that has no rules and regulation, I'm sure you are not going there. So it has to, rules and regulation means protection, always protection. Well, those of us who are fond of breaking rules and regulation, we feel punished when we see rules and regulation, yes? If you are a speeder, as soon as you see 55 miles an hour, you will say, why this is needed? Because you like breaking the rules all the time. But this, signings and these rules and regulations are not meant for torturing you. It is meant for making you safe. So therefore, this type of rules and regulations that guide us are meant for making us safe in our life. So these are being described as samskaras. First of all, we are in a Brahman Samaj. Well, we are all representing the Brahmanas, or because we are the lovers of this culture, we are here. What does it mean? What does it really mean? First principle, the Brahmana means, the Brahmana, in scriptures we understand there are 4 types of varnas and 4 types of ashrams. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. These are the varnas. And ashrams are sannyas, vanaprastha, grihastha and brahmacharya. Now, in each of these, the first principle is the Brahmanas are considered as a head of the society, just like this is an entire body.
this is a body. These 4 varnas and ashram are a body to a society. So of that, the scriptures divide, they say that the brahmanas are the head of the societies. Just like if you are applying for a job, you go out saying, I'm looking for a job. If you tell your employer or a person who is going to employ you, I have a problem in my stomach, you will say, just take a medicine, you will be fine. I have a problem in my arm. What is he going to say? Okay, take a medicine, take rest for a few days, come back. But if you say, I have a problem in my head, he will say, go, no job for you. No job for you. Because the function done by the head is very important. Because you are leading a whole society. First of all, the scriptures say that Brahman does not speak anywhere out of the scriptures. First principle of the Brahman. Just like the scriptures say that every humans have 4 types of defects. Every human beings. Do you know what they are? Defects? Defects. Every one of us have defects. Cheating, imperfect senses, illusion and mistakes. We all make a mistake. We all cheat. Yes? Yep. We are always in illusion. Yes, we are always in illusion. And imperfect senses. Our senses are imperfect. So therefore, because the concept or God is perfect, in order to understand something that is perfect, it has to be a perfect instrument. You cannot understand the quality of perfectness by using something that is imperfect. So therefore, the Brahmanas just speak from the Vedas or the scriptures because the scriptures are without the defect. So being a Brahmana, we don't speak from the scriptures, means there is a chance that we make mistake everywhere. Isn't it? Therefore Krishna says, Brahmanyo Hita Pura. In Bhagavad Gita we know what it says. Then he says, for further reference, he does not say go to this person, go to that person. He gives the names of the people where you can go. Rishivir Bauda Gitam Chandorva Vivitai Pratak Brahma Sutra Padistaiva Hitimat Vividishitai. So he said, many of the rishis describe about this. Taking the Vedas. Just like we know, आप सब लोग हिंदी भी थोड़ा समझते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझते हैं हिंदी में कर दूं क्या? प्रभु जी सर्वसम्मति 12 जने तो इंडिया से आए हैं। 12 जने यहाँ इंडिया से आए हैं। तो इंडिया से मैं हिंदी में बोल देता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो Are you okay? यहाँ पर some people will, they cannot understand. They are from south. I just asked them and they just say they are fine. Here, anyway, I'll mix in between. So I'll make sure that everyone participates on this. So, first point that we need to really understand is what is our duty. Otherwise, if we are just here to just spend some money and just be in the room for 5 hours, no one really wants to be here. Isn't it? We are the Brahmanas. Krishna said you have the biggest duty here. Because you are supposed to be the head to our society. You need to teach a society. Now, according to him, he says Brahmana, just like many of you are doctors here. Now, just as because a child is born in your home, you are a doctor, and a son is born to a doctor, doesn't mean he becomes a doctor right from the birth. Does it? No. He has to qualify himself. Go to the college, you study properly, you develop all the knowledge that doctor is supposed to have, not that because my daddy was a doctor, I don't go to school, I am a doctor now. It isn't good. Krishna says same thing. First thing the Brahmana needs to do in order to become a Brahman. Why is Ashwatthama being understood as a Dvija Bandhu? Ashwatthama is son of who? Dronacharya. Look in Mahabharata, it does not call him Brahman there. He is known as a Dvija Bandhu. Dvija Bandhu means a relative member of a Brahmana but not Brahman necessarily. You are born to a Brahman but you did not follow a principle of a Brahman. So therefore Krishna said, Dvija Bandhu, get to the side. Therefore he got the Pandavas to punish him. So first thing is to become a Brahman. Now there are 6 characteristics that have been explained that Brahmanas must have. Just arushan. Just like a beautiful body without decoration, what's the use? Any use? No. The decoration makes the body better. So therefore, when there is a Brahman, but Krishna says, and the Shastras also explained, that there are 6 occupational duties that a Brahman needs to have. Samo, Dhamma, Tapa, Saucham, Santir, Arjapam. Samo means
peacefulness, self-control, shaucham, cleanliness, arjavam, simplicity, samo dhamma tapo shaucham shanti arjavam, and jnanam vijnanam, always acquiring, always very expert in acquiring knowledge and in a realized knowledge, always having these two types of knowledge. In one way, always understanding what are the scriptures. Now, if you have this, now if you are an employer, if somebody tells you, I am very self-controlled, I am very peaceful, I am very non-violent, he has a better chance of finding a job than a person who says, I am very violent, I am very, loud. Well, Brahmanical qualities are desired in a society by anyone. It is not that just because you are born into a Brahman, you should develop this and nobody else. Isn't it? And that's what the Brahmanas are meant to teach everyone, that you all need to develop these qualities. So in that, as the scriptures explain, and I just hinted to you that without the rules and regulations, the society becomes chaos. And the better standards of rules and regulations are expected from the people who lead a better position, isn't it? Just like a normal citizen who breaks the rule, he gets just some punishment, that's all. But say a leader of a country, if you are a leader of the country, if you are a leader of a Samaj, you break the rule, what happens to you? You are punished heavily because you represent the higher society and you are expected to behave properly. So in the same way, the scriptures say the Brahmanas are punished more heavily because you are meant to lead a society and you misled them. Now this misleading is done because of self-interest. Sometimes there is a thing called a selective listening, because something is more digestible to me, I accept it. There is a story in the Puranas. There were 3 thieves. You want me to tell you the story? Oh, absolutely, please. Okay. So there are 3 thieves. We are dying to hear stories. ठीक है, 3 चोर थे. तो ये 3 चोर क्या हुआ कि ये चोरी करते करते सोचते हैं कि चोरी करते हैं, परंतु चोर का फल कभी भोग नहीं पाते हैं. Why? क्योंकि चोर को फल भोगने से पहले इतना भागने पड़ता है कि कोई पकड़े ना पकड़े, ये सब चिंता में पड़ता है कि उसको फल भोगने का कभी मौका ही नहीं मिलता है. तो सोचा कि आज फल भोगेंगे, परंतु अब चोरी करती हुई ऐसा माल चोरी करेंगे कि भोगने के लिए आसान पड़ेगी. तो सोचे कोई पाचकशाला में जाते, कोई रेस्टोरेंट में जाकर के कोई खाना चोरी कर लेंगे आज. तो घुस गए. तो शास्त्र इसीलिए इसमें कहता है, दिस इज फॉर सिलेक्टिव लिसनिंग. वी ट्राई टू लिसन ओनली व्हाट आई कैन डाइजेस्ट, नॉट व्हाट इज द ट्रूथ. But what did Krishna say in Gita? What did Krishna say? What is the austerity of the speech? Anudvagya karam vakyam satyam priyam hitam chayet swadhyaya rasanam chaiva bhammayam tapaucha. This is the austerity of the speech, and Brahman must have this. Anudvagya. Please speak the words that are pleasing to somebody. First point. Then that might be, well, different things please different people based on what they are situated on. And Krishna says, Anudvaitya karam vakyam, well, it should be truth. Don't speak something that is just like if I come to you, or if I go to somebody, a normal citizen, and say, my dear sir, you are the President of the United States. Well, this is a very high post to give him. But is it a truth? No. Don't just flatter somebody. So therefore, Anudvaityam karam vakyam satyam priyam hitam, it should benefit him also from what you are speaking. Swadhyaya. And speak from the scriptures. Don't just, bluff around just because somebody likes. So here, what happened was these 3 thieves, they stole a pot of some rice. So they took it away. So they decided who is going to eat. But they said, but we are all so hungry, only 1 pot of kheer, कौन खाएगा ये? तो बोले कि एक ही आदमी का पेट भरने के लिए खीर है तो एक ही खाएगा ना. तो बोले कि अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन खाएगा इसको? तो बोले चलो हम सो जाते हैं तीनों, और जो सबसे बढ़िया स्वप्न दिखेगा वही एक ही खाएगा. They all started, they went to their bed. सब सोने के लिए चले गए. सब लोग का यही चिंता था कि अगर सोने के बाद स्वप्न नहीं दिखा तो क्या होगा, फिर खाने नहीं मिलेगा. तो सोने से पहले ही सपने देखने लगे ये सब. क्या पता सोने के बाद नहीं दिखाई दे फिर, है ना. तो अब सपना बनाना चालू किया, किसी को नींद नहीं आया. तो एक आदमी बोलता है कि देखिए कि रात के सपने में हम सत्य लोग चले गए थे, ब्रह्मा लोग चले गए. ब्रह्मा लोग जा करके ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी के साथ
उनके विमान में बैठ करके स्वर्ग की दर्शन करने लग गए। तो दूसरा बोलता है तुम ब्रह्मलोक चले गए थे, हम तो शिवलोक गए। शिवलोक चले गए, शिवलोक जाकर के शिव जी के बेल में बैठ करके पूरा शिवलोक घुमा, उसके बाद ब्रह्मलोक भी घुमा। तो पहला आदमी बोलता है मैं तो केवल ब्रह्मलोक घुमा था, शिवलोक तो नहीं घुमा। तो बैटल तो ड्रीम सेकंड वाला का था ना। तो तीसरा वाला सोचा अब क्या करूं। तो बोलता है कि देखिए रात को जब सो रहा था एक बंदर आया, एक पूंछ वाला बंदर आया, हाथ में गदा पकड़ करके बोलता है कि खीर खा 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 नहीं तो मार डालूंगा तो नहीं मार डालूंगा तुझे। तो पूछते कि तू नहीं क्या किया फिर सपने में? बोलता मैंने खीर खा लिया। तो बोलते ये भी कोई सपना होता है क्या? हमने तो इतना बढ़िया दिखा, स्वर्ग घुमा, शिवलोक घुमा। तो बोलते अब चलो जाते हैं, इसको खीर नहीं मिलेगी आज। अब दोनों के अंदर डिसाइड करते, तो चले गए। तो जाते तो फिर खीर का पात्र खा लिए। तो खीर का पात्र खा लिए। तो अंत में जाकर के पूछते अरे भाई तूने क्या किया? हमको बुलाना था ना, अगर खीर खाना ही था तो बांट करके खा लेते। तो बोलता क्या करूं भाई, एक तो शिवलोक में थे, दूसरा ब्रह्मलोक में थे। मैं तुमको इतना ढूंढा कि मिले नहीं आपको, तो इसलिए हमको जाकर अकेले खा लिया। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर उद्देश्य सबका क्या था? खीर का पात्र था, ठीक है ना। और आपने सूटेबल के हिसाब से सपना बना दिया। तो सोसाइटी में भी जो व्यक्ति केवल शास्त्र को प्रेजेंट करता है, अपना जो शूट करता है, वो कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्र क्या कहता है कि धृत्य धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। जो चीज जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकता है, चाहे उसको त्यागने क्यों ना पड़े, परंतु त्यागनी चाहिए बोलते भगवान। ऐसा नहीं कि आई विल ट्राई टू कैरी एवरी होल लोड विथ मी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं, कुछ लोड छोड़ने की भी जरूरत पड़ती है, परंतु हम लोग समाज में कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वी जस्ट वांट टू एडजस्ट अ होल लाइफ अकॉर्डिंग टू द वे आई एम। इसलिए शास्त्र क्या कहता है? इंद्रिय सामान्यते जगत। चोर को सारा संसार चोर दिखाई देता है ना। तो काठियारा जो काठ बेचता है, उसको जंगल में भेजेंगे तो जंगल का पेड़ दिख के बोलेगा ये पेड़ बहुत अच्छा होगा, ये पेड़ बहुत अच्छा होगा, काट करके बेचने के लिए। अगर ब्राह्मण तपस्या करने वाला ब्राह्मण जंगल में घुसेगा तो सोचता है कि हाँ ये पेड़ तपस्या के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? अपना दृष्टि के ऊपर रहता है। इसीलिए तो शास्त्र में ये संस्कार के विधि इसलिए दिया जाता है कि अब देखिए एक बात, क्या संसार क्या है? संसार का अर्थ संस्कृत में रहता है समम रूपेण सरयति, जो समान रूप से समय के हिसाब से सरकते ही रहता है। इसको कहते हैं सरकना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ बैठा है तो यहाँ चला जाना, यहाँ बैठा है तो ये चला जाना। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हम लोग कुछ स्थिति में सरकते हैं। किसमें? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम्भ्यो वनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ते। भगवान कहते हैं जन्म होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसमें हम लोग को सरकने ही पड़ता है, चाहे आप स्वीकार करें चाहे नहीं करें। ये सरकने का संसार है। एक पोजीशन कभी आपको स्वीकार करने नहीं मिलता है। और भगवान कहते हैं इसमें कि दैवी हेषा गुणामयी, ये संसार ऐसा है जिसको पार पाना बहुत कठिन है, कोई भी पार नहीं पा सकता है। दैवी हेषा गुणामयी मम माया दुरत्या, क्योंकि मेरा शक्ति है। भगवान का शक्ति को कोई पार पा सकता है यार? एक रात का बारिश जोर से हो जाए तो बारिश को पार नहीं पा सकता है, दूसरी शक्ति का तो बात ही दूर है। परंतु कहते हैं माया में तम तरंती थे, जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा कृपा पड़ गई वो तार सकता है इसको। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया जाता है, जो सागर पार करने के लिए कठिन पड़ता है, जो व्यक्ति ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पण करता है, उसके लिए सागर पार करना उतना ही आसान है जैसा एक गाय के पादुक चिन्ह में भरा वाला जल को पार करने में आसान पड़ता है। गाय के जो फुटप्रिंट में पानी जो भरता है उसको पार करना कोई कठिन है क्या? नहीं ना। बोलते जो व्यक्ति ब्रह्म को जान करके पूरी तरह से भगवान के विषय में जानकारी जिसको हो जाता है, उसके लिए संसार पार करना उतना ही आसान है जितना आसान एक गाय के पादुक चिन्ह में भरे हुए जल को पार करने में। एवरीथिंग बिकम्स इजी। तो ब्राह्मण का काम और क्या है बताइए? यही तो है ना। अगर भगवान ये कहते हैं तो सबसे पहले अगर ब्राह्मण होकर के हम लोग इस बात में कन्विंस नहीं तो कन्विंस किसको करेंगे फिर? जैसे जब भारत में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा अल्टीमेट पढ़ाई के लिए जो बनारस में जाकर के अलग अलग स्कॉलर के साथ मिलने का था, तो स्कॉलर थे जिनने सात्विक भोजन के ऊपर बहुत प्रचार किया। तो घर में चले जाते हैं, ठीक है ना।
तो घर में चाले जाकर के आपने बीवी से कहते हैं कि चलो खाना लाओ, प्रसाद लाओ, तो खाना बहुत बढ़िया भोजन लाई, शाकाहारी भोजन लाई। तो अंत में जाकर के वो बोलते कि मछली कहाँ है, तो पूछते, बोलते आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया, बोलते मछली नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, तो बोलते ये तो सब किताबी मछली थे ना, जो किताब में लिखी है वो मछली नहीं खानी चाहिए, जो रेगुलर मछली खाते हो तो ठीक है। तो अब ये भावना से कैसा प्रचार करेगा ब्राह्मण, सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे सबसे पहले यही है कि संस्कार वृद्धि, संस्कार को हम लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार बोला जाता है, जो गर्भदान से चालू होती है, जिसको हम लोग गर्भदान संस्कार कहते हैं। गर्भदान संस्कार शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे हमसे पहले जो डॉक्टर साहब जी बोल रहे थे कि अन्न से सब जीव का उत्पन्न होता है, तो भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न सबभवत् यज्ञ भावति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सबभवत्। हर जीव अन्न में निर्धारित है, चाहे वो स्वर्ग या परलोक में चला जाता है, चाहे नरक में। जब इस संसार में आने पड़ता है तो अन्न का आश्रय लेकर के आ जाता है, बोलता है। पहले जाता है क्लाउड में, बादल में जाता है, बादल जल के रूप में आता है, जल अन्न में चला जाता है, अन्न लेने के बाद फिर जीव की उत्पत्ति होती है। और जैसे उत्पत्ति होता है इस संसार में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, किसको क्या पता कि कितने प्रकार के जीव रहते हैं, बहुत होते हैं। और ये संसार में उत्पत्ति होने का समय कब है? जो अभी चल रहा है, अभी चतुर्मास चल रहा है। शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो इसको एक रेनी सीजन बोला जाता है, जो बारिश की समय है। इंडिया में तो ये बारिश की समय चालू हो चुका है। तो इसी समय में तेतम भूत स्वर्ग लोका विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, जिसका पुण्य, जिसका क्रेडिट कार्ड खत्म हो चुका है स्वर्ग में, अब आकर के क्रेडिट बिल करने का टाइम हो गया। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति भगवान कहते हैं, दूसरी की बात नहीं है। अगर हम पे ब्राह्मण होकर के भगवान की बात को ला करके बात ना करे तो फिर क्या मतलब रहेगा? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। इस प्रकार से बोलते इस संसार में क्रेडिट बिल करते, बढ़िया से काम करते, अगर क्रेडिट अच्छा हुआ तो फिर ज्यादा समय तक भोगेंगे, अगर क्रेडिट ठीक नहीं था तो क्या होगा? फिर काम करना चालू करो। तो इसी प्रकार से स्वर्ग से या चाहे दूसरे लोग से हो, व्यक्ति बादल में आश्रय लेकर के, बादल से जल में, जल से अन्न में, और अन्न से माता के गर्भ में। तो ये गर्भधारण संस्कार इसीलिए किया जाता है कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि भगवान जब गर्भ धारण कर लो तो ऐसा कोई राक्षस को गर्भ में मत भेजना। कि किस माता को क्या पता है कि कौन गर्भ में आएगा? कोई चॉइस है माता लोग का? आप लोग बहुत माता है यहाँ पर, चॉइस किसी का नहीं है, जो भी देंगे वही लेने ही पड़ेगी। परंतु ये गर्भधारण संस्कार से भगवान से निवेदन किया जाता है कि जो भी गर्भ आएगा, ये भगवान ऐसा गर्भ करना जो धुंधुकारी ना हो। तो गर्भधारण संस्कार के बाद फिर आगे आगे संस्कार आते हैं। तो जिसको पालन करने से जीवन में क्या है